गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जे.आर. मोंगा की बुक का चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स। So question number 2, net profit of the company after providing for taxation for the past 5 years, 40,000, 42,000, 45,000, 46,000, 47,000. The capital employed in the business is 4 lakh, on which a reasonable rate of return of 10% is expected. It is hoped that company will be able to maintain its super profit for the next 5 years. तो ए बी सी 3 पॉइंट है, तीनों में अलग अलग हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ an annuity of super profit, taking the present value of an annuity of 1 rupee for 5 years at 10% interest is 3.78। तो पहले हम यही वाला करते हैं, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी वैल्यू। फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम हमें 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, उसका हम एवरेज करेंगे। तो 40,000 प्लस 42,000 प्लस 45 प्लस 46 प्लस 47,000 डिवाइडेड बाई 5। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 4 lakh 10%। तो ये एवरेज प्रॉफिट 44,000, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000, सुपर प्रॉफिट 4,000। तो सुपर प्रॉफिट 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.78, 15,120। ठीक है, ये तो हो गया ए पॉइंट। अब बी करेंगे। How would you answer your answer differ if the goodwill is calculated by capitalizing the excess of the annual average distributable profit over the reasonable return on capital employed on the basis of same return 10%? तो ये हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर 100। तो ये देखो, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 40,000। फिर है गुडविल, सी पॉइंट, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 5 इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 4,000 इंटू 5, so 20,000। So question done.